with the Aditya Birla Group and as well as the mutual fund. And in the past also, Aditya Birla has given very fantastic returns, and the clients are very happy with the kind of returns they are making in the fund house. मेरे हर इन्वेस्टर के एलोकेशन में आदित्य बिरला की स्कीम्स जरूर होती हैं. In last 25 years, customer got mature and he is investing money for a longer period. That is beneficial for customer as well as the asset management company or for me also. Over the last 14 years since I have been a part of the industry, I have seen more acceptance by the retail investor for the mutual funds, and also I have seen the regulators increasing activities towards promoting mutual funds as a whole for investments. एंट्री लोड खत्म हो गए थे, ब्रोकरेजेस काफी कम हो गई थी. एबीएसएल जो पहले था उसको डेट फंड उसके नाम से ही जाना जाता था, लेकिन अभी कुछ समय से इनकी इक्विटी स्कीम जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है और इक्विटी और डेट दोनों में अभी ठीक कर रहा है. My experience is excellent with Aditya Birla Sun Life platform. I will give out of 5 number on this platform because ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म मैंने इंडस्ट्री का देखा है जहाँ पे मेरे को जो रिक्वायर्ड है एज एन एडवाइजर वो सारा मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाता है. Even if I'm traveling abroad somewhere or I'm not in the city, I'm not in my office, through my mobile app I can initiate transactions, get switches done, redemptions or purchases or anything, whatever is there, the client's requirements get met out. We have been regularly using these digital platforms and I would rate Aditya Birla as one of the best. मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 मार्क्स दूंगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के समय की बहुत ज़रूरत है और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आदित्य बिरला सन लाइफ का काफ़ी बेटर काम कर रहा है. Yes, I was part of CEO Yatra and I had a good experience. I met with Bala sir two three times and he is fantastic guy. He is handling the entire team, the entire fund managers excellent. CEO यात्रा के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं. इससे काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा जिससे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा. हमारे एमडी और सीईओ बाला सर को आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि वो पिछले 3 दशक से इंडस्ट्री में विराजमान हैं. फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की इन्हें विशेष अनुभव है. 2009 में सीईओ बनने से पहले 2006 से और 9 में ये एबीएसएलएमएफ के सीआईओ पद पर थे. आज बाला सर 2,70,000 करोड़ की एएमसी और इसके अलावा रियल एस्टेट, ईएमएस और दुबई सिंगापुर में हमारी सब्सिडियरी को हेड करते हैं. इन्हें एशिया एसेट मैनेजमेंट द्वारा 2 साल 2018 और 2020 में सीईओ ऑफ द ईयर की पदवी से सम्मानित भी किया गया है. बाला सर इंडस्ट्री बॉडीज से भी जुड़े हुए हैं. ये एनआईएसएम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पद पर है जो कि सेबी द्वारा संस्थापित की गई है. ये सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और एजुकेशन फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी हैं. इन महत्वपूर्ण रोल्स के अलावा ये एक्टिव रोल प्ले करते हैं एज डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ एमफी और ये एमफी के चेयरमैन के पद पर भी 2 साल 2016 से 2018 तक कार्यरत थे. इसके अलावा 12 साल चैरिटेबल संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं जिनमें प्रमुख हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और आर्ट एंड कल्चर. बाला सर एक्टिव मेंबर्स हैं सत्य साई संजीवनी सेंटर फॉर चाइल्ड हेल्थ केयर के, जहां पर हृदय का उपचार किया जाता है, हृदय संबंधित विकारों का उपचार किया जाता है. और वो सत्य साई यूनिवर्सिटी से भी एसोसिएटेड है गुलबर्गा में, जहां पर छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करी जाती है. अब मैं आमंत्रित करता हूं बाला सर को, जो हमें बाजार पर सीईओ का दृष्टिकोण, इंडस्ट्री का भविष्य और उसमें निवेश के अवसर के बारे में बताएंगे. और आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि क्वेश्चन आंसर बॉक्स में चर्चा से संबंधित सवाल लिखते रहें ताकि मैं समय आने पर बाला सर से उन्हें पूछ सकूं. ओवर टू यू बाला सर. थैंक यू धीरेन्द्र जी एंड आपका सबका धन्यवाद
आप टाइम निकाल के ये सीवे यात्रा का मेरा आउटलुक फॉर 2021 और जस्ट फ्लैशबैक ऑफ 2020 सुनने के लिए, और ये भी मैं करेगा आपको धन्यवाद और थैंक यू भी बोलना चाहते हैं फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव बीन प्रोवाइडिंग। ये जो सीओ यात्रा, ऑफ कोर्स मैं हमेशा फिजिकल मीटिंग आप लोगों के साथ हमेशा करता रहता हूँ। ये जो स्टेट वाइज जो पहले जो शुरू किया था sometime in the year 2013 ऑल इंडिया टूर करके सीओ यात्रा नाम पे किया था। मैं बोला इट्स द बेस्ट टाइम एक्चुअली टू डू द सेम थिंग। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2021, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2020 जल्दी निकल गया। So I thought it would be worthwhile connecting with all our key partners and well-wishers and business partners. ये मार्केट में कैसे अपने सब मिलके अपने कैसे म्यूचुअल फंड का बड़ा कर सकते हैं। I have a presentation to show you. Just load it up. Yeah. So this presentation will go for about 20 minutes. I have a few slides. I thought मैं हमेशा एक्सटेंड कर लेता हूँ actually, but I thought I'll show you some slides. Again, these slides could be very important for us to understand किसके लिए थोड़ा ऑप्टिमिज्म रहना चाहिए, किसके लिए थोड़ा बुलिशनेस होना चाहिए, और उसका जो कारण जो है। So I thought I'll just use these slides for explaining. I think first let me start with the global economy. I think if you see the global economy, clearly we have seen a good bounce back in the market world, MSA world market. जो पुराना कोई भी आप टाइम का देखते हैं 1970 के बाद जो रिसेशन हुआ था, और उसके पहले भी मार्केट का देखते हैं, ये बार जो मार्केट में मूवमेंट आया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड दैट वी हैव सीन एवर इन द पास्ट। बट उनका जो इम्पैक्ट जो मार्केट में आया, which is there in the left side chart if you see, which is nothing but the rise in the market from the bottom, and जो उनका कारण जो है which of course known to all of us, जो the right side the easing of financial market condition, जो मार्केट के हिसाब से जो लास्ट द पास्ट ट्रेंड में the G8 कंट्रीज और G20 कंट्रीज मिलके जो लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के बाद एक्ट किया था, and whenever the economy goes for a slowdown, जो पॉलिसी मेकर का जो इम्पैक्ट जो आते हैं, and this time around is actually unprecedented, जो इतना जल्दी से आया, it's something which is never seen in the past. उसके वजह से भी we have seen a significant improvement in the global equity market. Second is, and any history rally that you have seen, whether it is 1929 or 38 जो global recession के बाद, depression के बाद, and then pandemic, the similar pandemic that happened about 100 years back, which called swine flu, or they call it so Spanish flu. All such things, कभी भी market का जो recovery जो आया, ये बार जो recovery आया market का is substantially higher than जो पहले इतना साल से देखा हुआ actually. That's again coming from the fact that जो regulator ये पूरा ये जो economic slowdown का ये लॉकडाउन के इम्पैक्ट का समझ के, तो वो बेसिस पे जो इंटरेस्ट रेट का जो घटाया और लिक्विडिटी के बढ़ाया और फिस्कल स्टिमुलस सोशल वेलफेयर स्कीम यूज करके द इंश्योर मनी इज बीइंग गिवन, द गारंटी जो प्रोवाइड किया था कॉर्पोरेट के लिए, एंड दोस वर एक्चुअली वन ऑफ द हाईएस्ट थिंग दैट वी हैव सीन। उसके वजह से जो लास्ट 4-5 साल से इफ यू सी द राइट चार्ट, जो हमेशा थिंग S&P 500 में all of us used to think actually the market 5 versus 495, 5 stocks मिलके 25% almost the exposure that they have built market cap 20% market cap in US S&P 500 में is coming from 5 companies. That was 18% in the year 2000, and then when subsequent period went up as is about 25%, आज के दिन पे it has fallen about 22%, means जो मार्केट का ब्रेथ जो लैग कर रहा था ये पीरियड में 2015 से जो आपका 2020 तक जो पुल कर रहा था, those were the 5 companies. Now the concentration is reduced to 22%, means the market का ब्रेथ
is widening purely on the basis of the moving away from tech-driven companies to real economy kind of companies also now beginning to show an uptake. And second is जो market का compared to what we saw in the beginning of the year, what we are seeing today, definitely the company's earnings expectation sentiment is on the rise. इसमें आप देखें the S&P 500 का the blue line and thick blue line, if you see, there is a upgrade of earnings compared to the downgrade of earnings in the past. जो पहले downgrade of earnings जो पहले जो हुआ था January 2020 में, the same speed में जो downgrade हुआ था, वही speed में अभी down upgrade पे आ गई है, it's coming in. So this is on the back of जो हिसाब से अप्रैल में जून में clearly we saw the fear which was there. Companies are uncertain. Company किसको भी actually मालूम नहीं था actually क्या करेंगे, क्या कैसे हो सकता है. But government gave a surprise of taking initiatives during this period to bring back the confidence. That confidence which came as a 1 month sales picking up in the name of pent up demand. So उसमें continue होके that अभी earnings upgrade आ गया. Even I also remember my own conversation तभी with company like Maruti. उनका यही कहना था actually that September तक wash out रहेंगे, sales बिल्कुल नहीं हो सकता है. I was talking to Hero Honda, they had echoed a similar kind of response. Then as time progressed, उनका भी view change होना शुरू हो गया था because they started seeing actually the demand coming back. That largely in my view is coming from interest rates. Interest rates have fallen quite substantially. अभी ऐसा मौका में अभी क्या हो गया that clearly 10-year bond yields in America or in Europe have dropped to such a low level. It's actually 0.5. Real rate of interest, the inflation वो ऊपर है और the interest rate नीचे है. That means real rate of interest is negative. So वो negative में एक actually stock market में दूसरा भी actually emerge हुआ, which is the dividend yield of companies is actually higher than the bond yields. If you see the chart, clearly the dividend yield of S&P 500 वो गिर के अभी actually reverse होना शुरू हुआ. Actually if you look at the blue line, now there is a reversal compared to the US bond yields, which something is higher than the US bond yields currently, which is basically indicating that equity is becoming attractive on dividend yielding companies. This is not just only the trend in US, this is also the trend actually in Europe. The same way if you look at the companies which have been rewarded on the growth, अब market का हमेशा दो type of companies रहते हैं. एक तो growth companies, second is value companies, and then we have cyclical companies. And वो basis पे clearly if you look at the chart, जो bar chart जो है, the लंबा bar chart है, it is basically the level of outperformance of growth companies. 2009 से लेके 2020 तक high growth companies have done better. यही period में the line chart जो दिखता है actually गिरने का chart जो दिखता है, that is basically the world valued companies have been actually falling at the cost of growth companies rising. This मेरे हिसाब से जो market का अभी structure बन रहा है, so this is something we'll probably see a reversal of value companies now getting recognized, and this probably will also pull up the overall market. And this outperformance जो पहले जो हुआ था value companies का 2000 के बाद financial crisis, global financial crisis के बाद, we saw a significant pickup till about 2009 in the value companies, and after that it continued to fall. This मेरे हिसाब से we are at a stage dividend yield is higher than the bond yields, and broad market been rewarding growth companies, but now the sectoral rotation also beginning to happen, including the value companies. Over basis पे I think globally market का trend set हो रहा है. The same way जो corporate bond yield के हिसाब से जो पहले बताया था actually is also coming from the fact that bond yields is actually dividend yield of companies S&P 500 का as well as European market का भी is high. The reason why I am talking about these opportunities in global market, ultimately दो theme जो set होते हैं global market पे, वही theme invariably
gets percolated to other market, including emerging market. Therefore, understanding the global market trend is equally important to build conviction on India market. So this is something very interesting. The market, if you look at, and especially I brought this slide for one reason, that most of the time we all as individuals advising customers as well as managing portfolios, we go through four type of phases in market. A despair, and despair is nothing but COVID ka time pe jo hua tha. That something is extremely unknown, very scary, and such kind of this situation, one may not know actually what to do at that point of time. That's a despair situation. काम करना है और growth करना है, but करना क्या है, कैसे करना है मालूम नहीं पड़ता है. That period is about despair period, about 16-month period. Whereas if you look at all other period, whether it is hope period, growth period, optimism period, is actually quite a long period. जो मेरे हिसाब से जो hope का period जो last 6 महीने से हुआ, there's a hope period, will probably gradually get into the hope and growth period, and growth to optimism period. ये period का advantage है from the market point of view. ये जो despair का situation में आप chart में देखेंगे, the left side, the bottom chart, if you see clearly the -43, -41, it is nothing but reflection of P आपके negative हो रहे हैं, EPS negative हो रहे हैं, real return भी negative हो रहे हैं despair situation में. Whereas hope and growth and optimism time पे आपको real return भी positive हो रहा है और EPS growth भी positive आ रहे हैं और P expansion भी depending upon which segment P expansion भी हो रहा है actually. So this is a typical market cycle. Therefore we all must understand this path. जो हिसाब से जो policy makers का the last एक साल से जो focus आया, the policy support and bringing the interest rate, US, UK or Europe or even Asian market including India, the single point focus that came, high liquidity, low interest rate regime and easy availability of money. That has been some of the single point for focus that has come in global market. Therefore that liquidity driven rally not only going to happen in US, it will also happen in India as well. So inflation is something is one of the focus area. Luckily global inflation remain below the target. Therefore monetary policy उसके वजह से जो accommodative monetary policy it remains for longer period. That's the estimate that is coming in for global economy. So naturally इसमें एक problem होता है actually इसमें, which is a negative real rate of interest, which is nothing but inflation. The interest rate minus the inflation is the one which actually determines whether it is a negative interest rate or positive interest rate. Definitely globally negative interest है. उसके वजह से the money is actually looking at likely to move from US to others. Therefore US dollar का जो depreciation जो इतना साल से appreciation हो रहा था because money was going to US. Therefore the money is coming actually from US to the rest of the economy. Therefore rupee dollar also will become much stronger, and US dollar as a result of this activities would become weaker in some sense. Therefore that could push actually money into the emerging markets. I'll come to that later. In the meantime, from earnings point of view, as I mentioned earlier, that definitely the market goes through some bit of ups and downs. Clearly the forward 12-month EPS on the basis of the expected recovery, broad improvement जो the expectation जो है on EPS growth and in the companies is now getting more and more visible, and more companies are also giving the high visibility for the earnings. ये मेरे हिसाब से 2022 में it could drive. Then second is from the market point of view, various sectors are the sectors which generally looked at. I think there's a chart if you see जो चार्टों में है companies, the sectors जो है is move from low growth to the high growth and low P multiple to the high P multiples. Clearly some of these companies in this information technology space, consumer durables, consumer staples and industrial companies, they all come in the reasonably high growth, reasonably high P multiples. But there are companies in the high growth but low P multiples because of uncertainty, mainly on healthcare, materials and automobiles, components. These are I think companies which are on the sideline
not sure about how economy will pick up. Now they are also beginning to come back on the basis of low interest rates and demand coming back on consumers, and therefore that sector also now becoming one of the theme to play out. But from the broad market point of view, one sector, unlike many in the past, today every sector is getting participation क्योंकि उनका जो growth outlook is also getting better as they move forward. So वो basis पे the sector rotation also continue to drive जो market का जो sentiment है, sector rotation also is playing a bigger role. The last of course is on the MSCI जो index. MSCI index को index के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ actually? जो globally जो पैसा जो move होते हैं, the money that move from developed market to a global market or emerging market, so उनका जो tracking हमेशा होते हैं MSCI का index में tracking होते हैं, and global investors, pension funds, they base on the base of MSCI index invest in various countries. And the way I think the MSCI index का जो आज के दिन पे MSCI index में चर्चा चल रहा है, which is the Chinese economy का trade war between US and China seems to be creating some trouble for some of the Chinese listed companies in US. Second, जो Ant Financial Alibaba.com का failure के बाद clearly even Chinese economy में the kind of whip that they are taking on some of these bigger companies, हिसाब से last 6 महीने से the number of companies का default हो रहा है actually. The way IL&FS crisis what we saw 2 years back in India, अभी चाइना में हो रहा है. Number of companies defaulting are rising. उसके वजह से the chances of your MSCI index weight moving more towards India is high. जो चाइना का index weight थोड़ा कम होके, and that weight probably partially could shifted to India. Therefore, MSCI index weight increase for some of these companies, and index weight is increasing for India, also would potentially drive the equity market. From India point of view, clearly, ये जो मैं बोल रहा हूँ actually जो इंडिया में जो कर रहे हैं उसका support करना चाहिए, but clearly I think the step that is being taken by government, so उनका support I think आ सकता है actually for bringing in more conviction from foreign investors point of view in India. Clearly market का जो पहले जो chart देखा था actually, clearly we see a similar chart in India as well. जो निफ्टी का जो growth आया clearly is quite substantial after steep fall that we saw in the month of March. It shook everybody, but now coming back and gone past the previous level, it shows the conviction and the growth phase in which I think India could come, and therefore that hope and optimism is driving the market. दूसरा आप right side पे आप देखें, clearly आपको the sector that has done extremely well during the last year period was healthcare, IT index continues to do well. Consumer durables they all gave below Nifty more or less Nifty return. But two sectors which didn't come back is actually small and mid cap, and mid cap have given better than the Nifty. That means that the wider participation is coming in the market. So in addition to that, जो RBI का जो policy rate जो हिसाब से जो rate cut कर रहा था, and believe me that none of us would have estimated RBI का इतना जोर से rate cut और liquidity provide करने के लिए decision लिया हुआ actually. It has never happened the past. आज जो foreign flows में जो हिसाब से RBI ने जो रुपी डॉलर का handle किया actually, that itself has brought huge amount of dollar flow in the country. $14.5 billion money coming in from overseas investors is something unprecedented. आप ये जो chart जो table जो दिया है उसमें देखें Korea, Taiwan, everywhere is negative, the 2020 last column, whereas India is the only one to receive money of about $14.5 billion. That is coming pure on the back of the Atmanirbhar Bharat of Make in India theme which government of India is making. See, India point of view, they're making right noise, right focus, and what is needed in the form of pull factor and push factor. ये जो government को जो कर रहे हैं, clearly is something is seeing as a progressive steps that is being taken by the government. जो आत्मनिर्भर भारत
is something which the government is trying to do on manufacturing, making India as manufacturing hub. मेरे हिसाब से जो next 1-2 साल में because of 15% tax applicable for new manufacturing companies, we'll probably find more and more companies coming to India. ये जो company को attract करने के लिए जो east states, UP states have done a good job, and Gujarat has done a good job. Even some of the other states are coming under pressure to pull in investors into their states. ये भी मेरे हिसाब से is something is going to do a great work. Second is interest rates इतना low है actually globally. मेरे हिसाब से जो the assets, road assets and some of the complete assets may also find buyers coming from overseas investors. Therefore, pumping in more money from the rest of the world into India into this segment, मेरे हिसाब से इसमें I think बहुत बढ़ने का chances है. Second is as a result of this, the GDP expectation है, as per our own internal estimate, Mani Dangi team has put it, in the current financial year, 13.5% का GDP growth आना umid hai. But where from it will come? Clearly, it come from FDI investment, coming in the manufacturing capex reviving. Second is exports. It's picking up. Import has been coming down. Housing sector is getting a renewed attention. जो पहले the last 2 साल से housing as a sector, or maybe last 5 years, housing as a sector has suffered. Not even 5 years, almost 7 years. मेरे हिसाब से this government now will bring in high focus on housing sector. तो इनका ये sector में अगर focus करें, it can actually give a multiple positive impact on the whole ecosystem. The banking sector's NPAs also is coming to a level, even post crisis of COVID, the moratorium which companies are giving were more or less reasonable. It's not having much impact on NPAs rising. The banking system today is one of the well capitalized banking systems in the world, and उसका वजह से the credit growth पहले जो rotation बिल्कुल नहीं हो रहा था post ILFS crisis, जो market में इतना jam हो गया था, despite people need money, the lending was not happening. Thanks to the government of India, push towards SME guarantee have brought back credit growth also to a normalized fashion. So इसका impact naturally comes in the consumption growth coming back. I think today the consumption growth in the country is on the verge of pickup. If we go by two-wheeler sales, if we go by fridge sales, if we go by washing machine kind of things, if you go by all those numbers, then definitely we are seeing consumption gradually is coming back, led by low interest rate. And real estate demand, जो पहले जब बताया था, this is the first time where ये जो rates में देख रहा हूँ, 2004 was the lowest rate I saw, IDBI cutting down to 7%. आज के दिन पे जो loan rate जो चलता है, is one of the lowest rate that we are ever witnessing in the country, and इसका impact बढ़िया आ सकता है in reviving the real estate market. Second is the builders. Also with the help of the government, the state government, they have now reduced the stamp duty. उसके वजह से builder भी आज के दिन पे price में focus नहीं कर रहे हैं, volume में focus कर रहे हैं. Basically everyone wants to remove the inventory. Therefore the last 4-5 months से जो focus जो आया, without increasing the price, you release the inventory, get the cash, repay the loan, and then that goes to actually change of hands from builder to the owner, and that's something which will bring back the spending towards housing sectors. Therefore, it makes the actually whole housing sector to do better. The lastly, housing sector remains the REIT. REIT investment, the way in which chalta actually. The recent REIT promoted by Blackstone have received good response from overseas investors. Because assets actually is one of the best assets to own, gives about 7% return, plus it also gives a capital appreciation. वो basis में foreign investors also now looking at more participating in the retail assets in India. In terms of inflation from RBI point of view, clearly the easing policy continues despite inflation का fear आने के बाद भी RBI का has to choose अगर inflation का control करना है using monetary policy और growth को वापस लेके आना है using monetary policy. मेरे हिसाब से growth को वापस आना is actually one of the mantra
with RBI and government is doing it. And providing liquidity is actually through the rate cut or through buying forex reserves. जो हिसाब से जो forex reserves अपना जो left chart में आप नीचे देखेंगे, which is the 9.6 per 6 times of the cover, 9.6 months. एक साल के अंदर import cover का जो cover होता था, now it has gone about 17 months cover, which means Reserve Bank of India have been accumulating forex reserves and printing notes and managing the currency, which in my view मेरे हिसाब से ये जो forex reserve आज के दिन में जो चल रहा है, $1 trillion का forex reserve हो सकता है एक 2 साल में, on the basis of जो पैसे जो country में आ रहे हैं, उसमें 2 साल में $1 trillion हो गया है. I think it will probably become one of the most well-positioned balance of payment current account deficit में. उसका बढ़िया impact आ सकता है to get foreign flows continuously, because rupee dollar का stability अगर moment आपको आ गया है, then you don't need to worry about anything else. That मेरे हिसाब से is something. उसका वजह से clearly Goldman Sachs kind of big companies have raised the overweight for India purely on the basis of the fundamentals of the economy is actually changing. This fundamental economy is being supported by policy makers का जो very होते हैं. One of the big area that my own feeling is coming is on the agriculture sectors. Clearly that will drive the rural economy. The agriculture sector का जो contribution जो है, I think next 3-4 साल में अच्छा बढ़ सकता है, because agriculture reform the government is doing it. The credit guarantee scheme जो government ने जो बनाया था, it is the government policy reforms में credit guarantee schemes the small and mid cap companies को दिया था SMEs के लिए, that actually boosted the confidence of SME sectors. It also boost the confidence of lenders. जो banks को जो lending करते थे, उनका भी confidence उसको ऐसे बढ़ गया है क्योंकि government guarantee है, इसके लिए बिंदास जाके lending करते हैं. That bindas lending is also bringing back the credit protection back in the systems. Therefore, the budget 2021, जो finance minister has been saying it will be one of the best budget. मेरे हिसाब से it could be one of the best budget for 2 reasons. One, आज के दिन पे fiscal का जो worry पहले होता, उतना worry करने की जरूरत नहीं क्योंकि fiscal problem is not our problem. Fiscal problem is a universal problem. It's actually US में भी fiscal का problem है. कोई भी आप country देखेंगे fiscal का problem है. Therefore, this will be accepted नाम the way interest rate का जो नीचे interest rate लेके आया, ये fiscal का भी मेरे हिसाब से accepted नाम हो जाएगा. Therefore, the budget will probably focus on infrastructure spending on one side, revival of auto industries by way of special incentive as well as scrapping policy. And third, of course, will also, मेरे हिसाब से, my personal view, the budget may also focus on the minor irritances related to the taxation, which is the high tax may not get reduced. At the same time, जो irritant taxes are there, basically TDS on REIT and TDS on some of the corporate bonds, the capital gain tax in the equity may all probably disappear in the coming budget. And also the focus on real estate revival, some bit of incentive could also come for real estate sectors. Therefore, ये budget में मेरे हिसाब से there will be many provisions which will come, which will be making India as a growth country the next 2-3 years. ये जो मैं बोल रहा हूँ पूरा करना जरूरी है, मेरे हिसाब से करेंगे ये, क्योंकि at the end of the day fiscal का आपको bridge operation हो सकता है only through the divestment at this point of time or improve tax collection. So दोनों मिलके आप देखेंगे, they will probably focus on bigger items for tax collection rather than small items. Therefore, all the minor return tax, if it goes away, definitely from you and me point of view, can actually do a lot of good things. So in this scenario, one of course staying bullish is important in equity. At the same time, look at the asset allocations and schemes in which I think one can make investment. The fixed income asset class, जो last 3-4 साल से जो opportunity जो था, whether it is credit fund or the duration funds, that is gradually disappearing. Now it's coming back to the accrual kind of funds with the higher credit quality is something that remains one of the key area of focus for this year in fixed income concerns. So each funds in our own fold, we have now divided into how much funds that can go for 1 month, 3 months, 1 year and 3 years. Definitely the interest rates where they are so low today, 1 over 3 year, अगर 1 साल का अगर 4% है,
3 stake, 2 साल का 5.5 है. So the 4 minus 5.5 is actually makes a case for investing in low duration funds, floating rate funds, short term funds or corporate fund. I think we have come to such a level. The yield pickup between 1 and 2 years is high. Therefore, one can actually look at that segment. 1 versus 10 is too risky because of fiscal being under its rising trend. Therefore, उसमें risk actually ज़्यादा है. Therefore, we are recommending to people to 1 to 2 years kind of duration papers that can be looked at. It comes in low duration fund, floating rate fund, short term fund, corporate bond fund, and banking PSU funds. इसका अलावा my own belief is with the equity market continues to be on the bullish side, arbitrage funds will again come back on the radar, giving about 4.5% kind of return expectations. Now, arbitrage fund, tax adjusted basis, of course, is much better than even fixed income schemes. Because of equity, it continues to remain. After seeing experience, जो market गिरने के बाद जिस हिसाब से market बढ़ा, ये experience के बाद clearly I think one thing would get reiterated. Focus on allocations between large and multi-cap, mid-cap and thematic funds would continue to remain the key success mantra for investing in equity. We should not deviate from that, like fund equity or focus equity on large cap, Sun Life equity or equity advantage fund on the multi-cap, small and mid-cap fund on the mid-cap for giving an alpha. Even thematic funds, most of the time we ignored. Thematic funds such as banking, Gen X fund or digital fund can also provide a greater solution for generating alpha in the portfolios. So that, in our belief, continues to remain the focus area. Having said that, there are 2 funds in the current market. सबका एक सवाल है actually, इतना market ऊपर, आज भी ऊपर market ऊपर है, इतना market ऊंचे में equity में डालेगा तो risk है. Of course, risk is always there. We cannot rule out. But at the same time, हमको invest भी करना अपने को. Fixed income में जाएगा तो भी interest नहीं मिल रहा है. Therefore, दोनों actually तरफ से extreme है. Equity is high, bond market is low. ये दोनों में क्या करें? That our belief is the best way to actually look at investment at this point of time to the balance advantage fund category, which I'll talk about a little in a while. And on the various asset classes, gold is something that's given a fantastic return. But I think now going forward, जो हिसाब से जो gold में जो traction आ रहा था, the last 1-2 साल में, that traction probably get reduced because when the growth comes back, I think gold and asset class generally underperform. But of course, not give a negative value, but definitely it can actually give an underperformance to the equity. Real estate, something as I mentioned, it could come back. Debt is something which again more neutral, 5.5% kind of return expectations. Past return has been 8.8, but I think going forward, return expectation can be about 5.5%. Whereas the equity as an asset class is only asset class can give about 12 to 13% kind of return on equity. Therefore, an allocation towards equity, in our belief, is will have to be continued to higher than other asset classes. So just quickly come back to the my own learnings, which I thought during this 9-month period, COVID के हिसाब से the both learning आया, आपको भी both learning आया होगा, and in own personal way or in a professional way or customer reaction way, solution would have come. My own learning, which I used it for my Z interview spontaneously, when I was asked a question about key learnings for the 2020, definitely all of us are used to investing in the market on the basis of quarterly results. जो quarterly results देखते हैं, अच्छा आते हैं, bullish हो जाते हैं, खराब आ जाते हैं, bearish हो जाते हैं. But this is the first time ever, ये last 9 months में कोई भी quarterly number देखा ही नहीं. Analyst भी क्या नहीं होगा, क्योंकि ये तो washout था. Everyone looking at washout. So they were under assumption it will be a washout month. As time started progressing, definitely I think the quarterly numbers start getting better. Therefore, looking at making investment with the quarterly numbers on anything that we do may not be necessarily will give you a success, but ultimately we have to stay bullish on how the companies are run in a sustainable manner is something key to the success. At the same time, on equity, sometimes, many times, we do go through a pain on equity. I think when there is a pain, there is something to be gained. When there is a bull market, when there is a significant uptick, then naturally equity will need to be balanced. And that's another learning. When there is fear in the market, when there is fear in the street, that the best time to invest in equity, as Warren Buffett says. Again, another learning is not only learning, definitely the learning, again being reiterated,
how to actually approach the equity investing when there is a flood on the market. And developments in terms of mutual fund, definitely आपको सबको पता है actually that mutual fund at least touch 30 lakh crore size, and this has come on the back of high liquidity, and the corporates are sitting with a lot of liquidity in the balance sheet. The bigger corporates today are in a mood to reverse the debt and accumulating more cash. The number of companies who are reducing debt have gone up because everybody started earning surplus cash. So that money has come into the mutual funds, and that's something, in my view, it's a reinforcement of confidence of investing in mutual funds. Therefore, the size is becoming bigger. When I was an AMFI chairman, all of you know that it came with the BCG report, called BCG report. We put a $1 trillion size and mutual funds, assets under management. मेरा हिसाब से we are on track in going that direction. आज के दिन पे the way interest rates are behaving, the way investment opportunities are getting reduced, narrowing, and finally pushing to the equity as an asset class. मेरे हिसाब से next 2-3 years again will come back in terms of the growth for mutual funds, including driving SIP, including driving equity as asset class. Therefore, for all of us being in this part of the industry, I think staying bullish and focusing on building customer base would be key to the success. As a fund house, of course, during the last 6 months period, we had multiple hours of engagement on our investor education and health-related seminars. We done many. I'm sure many of you would also participated. But this, our part of our engagement with all of you, would continue. And during COVID period, इसका एकदम aggression बढ़ा दिया था because that was the best time actually to connect with the people when there was a stress time, and that's something we'll continue to do even going forward. Finally, I'm coming to the final slide. जो पहले जो product बताया था, various product, clearly my own personal view and as a fund house, also we believe now time has come to build our Aditya Birla Sun Life Balance Advantage Fund for the reason I mentioned. एक तो equity market is high. And when the equity market in this year, we increased the equity exposure from about 40% to as about 83%, and then we reduced we kept it a range of about 50 to 85% for throughout this period. अभी मेरे हिसाब से 40% का the equity exposure किया है. The second advantage for you as a distributor, our fund size is still we kept it low. We never promoted in the past, and now something which we are promoting, so it also could come in handy for you to at least own. From a customer point of view, we don't need to have much comprehension about the past dividend and so on and so forth. This is something that will come in handy. The size will come in handy to even push this product very aggressively. And then finally, I also want to highlight from an investment process point of an equity. Clearly, we have changed to analyst-driven fund. The small and mid-cap fund on 1st of April we introduced. Existing small and mid-cap fund being managed by analyst, and to the bottom of stock picking, the individual analyst का the best pick जो है, so that could come as part of the portfolio. वो basis पे this fund has done exceedingly well. I just want to highlight this fund to you, not for just recommendation, just for you to know that that fund is being managed by analysts. Therefore, you can keep a close watch on this in terms of how the analyst-driven funds contribute to the success of not just only small and mid-cap fund. Even as a fund house, the success that you are bringing on, coming back on equity performance, is also on the back of some of the process change that we have done. So this is what I just want to highlight. I'm sure you'll have many questions to ask. And once Narendra Pathak is, of course, takes over from me and have his own other engagement, then I'll allow Q&As being answered for you. Thank you. धन्यवाद बाला सर आपको. आपने बहुत ही सरल तरीके से हमें आउटलुक के बारे में बताया और कहां पर निवेश की संभावनाएं हैं हमारे एएमसी में, उसके बारे में भी जानकारी दी. बाला सर ने जो कुछ भी बताया उसको शॉर्ट में समराइज करता हूं मैं अगले 3 मिनट में. सबसे पहला, सेंट्रल बैंक्स की इजी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू करेगी, जो कि आगे भी जारी रहेगी और मार्केट सेक्टर रिट्रेशन होने के कारण ब्रॉड बेस्ड रहेगी. दूसरा, अर्निंग सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होने और डिविडेंड यील्ड बॉन्ड यील्ड से ज्यादा होने की वजह से इक्विटी में पैसा आता रहेगा.
वैल्यू कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं उनमें तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। इक्विटी वैल्यूएशंस थोड़े ऊपर जरूर हैं, पर जब हम इन्हें दूसरे एसेट क्लासेस और डिविडेंड यील्ड के संदर्भ में देखते हैं तो इक्विटी अभी भी बेहतर प्रतीत होती है। लो इंटरेस्ट रेट रिजाइन की अगर बात करें तो अगले कुछ साल तक और चलेगा और फोकस जो रहेगा मार्केट का वो ग्रोथ पे रहेगा। नटशेल में लो इंटरेस्ट रेट, हाई लिक्विडिटी, पॉलिसी सपोर्ट और कंज्यूमर डिमांड वापस आने की वजह से कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ेगी। इंक्रीमेंटल फोकस हेल्थ केयर, ऑटो और ऑटो एक्सेलरीज और मटेरियल सेक्टर पे रहेगा। और अगर चाइनीज कंपनियां ग्लोबल इंडेक्स से बाहर निकलती हैं और MSCI में इंडिया का वेटेज बढ़ता है जो कि अभी 9.5 है, वो 13% तक भी जा सकता है, तो काफी सारा पैसा भारत में आने की संभावना है। कुछ पॉजिटिव ट्रेंड और इमर्ज किया है कंपनियों की तरफ से जिन्होंने इक्विटी कैपिटल लेस किया है और डेट को कम किया है, जो ये दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में ग्रोथ अच्छी रहेगी। हमारा ऐसा मानना है कि GDP ग्रोथ 13 से 13.5% तक रहेगी, जो कि काफी अच्छी है। अब हम बताते हैं कि हमें अपने बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में कहाँ पर निवेश की संभावनाएं दिखती हैं। तो लार्ज कैप की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एलोकेशन हमारी धारणा है कि 25 से 30% का होना चाहिए, और यहाँ पर आप फ्रंट लाइन इक्विटी और ABSL फोकस्ड इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। मल्टी कैप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन यहाँ पे होना चाहिए आज की डेट में, और इसमें हमारे फ्लैगशिप फंड्स हैं ABSL इक्विटी एडवांटेज और साथ ही साथ टैक्स रिलीफ 96। मिड और स्मॉल कैप की बात करें तो जैसा कि बाला सर ने बताया कि स्मॉल कैप फंड हमारा एनालिस्ट ड्रिवन फंड है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिटर्न्स है। यहाँ पे 15 से 20% का एलोकेशन आप कर सकते हैं। अगर थीमेटिक फंडों की बात करें तो 15 से 20% का एलोकेशन यहाँ पर किया जा सकता है, जहाँ पर हमारा जेननेक्स फंड, हमारा बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया में इंटरनेशनल इक्विटी में भी एक्सपोजर है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसके बारे में जानकारी अपने RM से प्राप्त कर सकते हैं। डेट की अगर बात करते हैं तो एक महीना या उससे ऊपर में सेविंग्स फंड और मनी मैनेजर में निवेश किया जा सकता है। 3 महीने या उससे ऊपर अगर निवेश करना है तो लो ड्यूरेशन और फ्लोटिंग रेट फंड बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर 1 साल से ऊपर का व्यू है तो शॉर्ट टर्म फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, इसके अलावा BPSU मतलब बैंकिंग एंड PSU फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर हमारा होराइजन 3 साल से ऊपर है तो हम ABSL इनकम फंड को देख सकते हैं। आखिर में मैं जैसा कि बाला सर ने बोला, बैलेंस एडवांटेज फंड एक सबसे अनुकूल फंड है जहां पर कि आप इस समय निवेश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक के आधार के हिसाब से मार्केट में हायर मार्केट पे कम और लोअर मार्केट पे ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर होता है। तो जिन्हें वोलेटिलिटी से डर लगता है वो यहाँ पर निवेश करके अपने पैसे को आगे बढ़ा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे फंडों में तेजी से वापस आई हुई परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन दें, ताकि हमारे और आपके साथ जुड़े हुए निवेशक इसका लाभ उठा सकें। मैं आपसे दोबारा से बोलना चाहूँगा कि Q&A सेक्शन में आप क्वेश्चंस को डालते रहें ताकि समय आने पर हम बाला सर से उसे पूछ सकें। अब हम बात करते हैं अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज के बारे में। आपके सुझावों को सम्मिलित करना और निरंतर चुनौतियों का समाधान ढूंढने की सोच और शक्ति ने हमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को और कारगर बनाने में मदद किया है, और आज के इस डिजिटल युग में इन सेवाओं के महत्व को और भी बढ़ गया है। इसलिए डिजिटल यात्रा में इनका जिक्र करना आवश्यक है। मैं आमंत्रित करता हूं अपने सहयोगी शिवम और अमित गुप्ता को कि वो हमें हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताएं कि कैसे आप और हमारे निवेशक इसका सही और आसानी से उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद धीरेन्द्र सर, धन्यवाद बाला सर, आपके बाजार के दृष्टिकोण को हम सबके बीच साझा करने के लिए। और इस मंच के जरिए आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हमेशा से अग्रसर रहा है आपको और आपके निवेशकों को कुछ लाभदायक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, जिसके जरिए आप अपने निवेश को निरंतर बढ़ा सकते हैं।
इसी के चलते आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। हालांकि इससे आप भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन इसमें जो वैल्यू एडिशन है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो इसको मैं 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला एसटीपी के माध्यम से, दूसरा एसडब्ल्यूपी जो कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है, और तीसरा जो हम सबकी बैकबोन हम कह सकते हैं इंडस्ट्री की, एसआईपीज। तो सबसे पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा सेंचुरी एसटीपी। सेंचुरी एसटीपी आप हमारे सेंचुरी एसआईपी प्रोडक्ट से भली भांति वाकिफ होंगे, जहां पे हम आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट का 100 गुना तक का लाइफ कवर विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक उन्हीं सुविधाओं का फायदा आप अपने जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके निवेशकों के, उसके जरिए भी सेंचुरी एसटीपी के माध्यम से उठा सकते हैं। यानी कि आपका जो भी लमसम अमाउंट डेट स्कीम्स में होगा, उसको अगर आप 36 महीने के मिनिमम पीरियड के लिए रजिस्टर करवाते हैं, तो आपका पहले साल 10 गुने का कवर, दूसरे साल 50 गुने का कवर, और तीसरे साल ये 100 गुने तक का कवर आप विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने निवेशकों के लिए। हालांकि इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एक पैन पर यह जो अधिकतम सीमा है वो 50 लाख रुपए की है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ, जो कि स्मार्ट विड्रॉल फैसिलिटी है। स्मार्ट विड्रॉल फैसिलिटी में हम 2 तरीके से अपने विड्रॉल्स को निकाल सकते हैं। पहला है फिक्स पेमेंट फैसिलिटी। इसमें आप सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसमें 8% तक की दर से आप अपनी चुनिंदा स्कीम से विड्रॉल साल भर में कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है वेरिएबल पेमेंट फैसिलिटी का। वेरिएबल पेमेंट फैसिलिटी में आप ब्याज दर तो नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर स्कीम में जब भी डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, उस डिविडेंड डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग आपको वो सेम अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने कुछ अन्य वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ, जिसमें सबसे जरूरी जो यहाँ पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा वो है वैल्यू एसटीपी। वैल्यू एसटीपी यूं कहें तो एक स्मार्ट तरीका है बाजार के उतार चढ़ाव को कैप्चर करने का। यानी कि जब भी मार्केट्स हायर लेवल पे होंगी, तेजी में होंगी, तो आपकी कम यूनिट्स ट्रांसफर की जाएगी, और जब भी मार्केट्स में मंदी होगी तो आप ज्यादा खरीदारी कर पाएंगे। तो आप ऑलरेडी वैल्यू एसटीपी के जरिए इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा हमारा इसमें जो बहुत जरूरी प्लान है वो है कैपिटल एप्रिसिएशन ट्रांसफर प्लान। ये मैं यूं कहूँ, ये आपके और आपके निवेशक दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसमें क्या होता है कि जब भी प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है तो यूजुअली हमने विड्रॉल्स देखे हैं। यहाँ पे आप उस कैपिटल एप्रिसिएशन को किसी भी डेट स्कीम में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो निवेशक के लिए फायदा यह है कि बैंक अकाउंट से बेहतर ब्याज दर हमारे डेट प्रोडक्ट्स में मिल जाते हैं, तो वहां पे निवेशक को फायदा होगा और आपका एसेट बेस भी मेंटेन रहेगा, यानी वो एसेट आपके पास ही है। सो इसका भी फायदा भरपूर उठाएं, ये आपसे मेरा निवेदन है। एक और हमारी जो फैसिलिटी है स्मार्ट प्रीमियम पेमेंट फैसिलिटी, जिसमें हमने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ टाई अप किया हुआ है। इसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी जो प्रीमियम पेमेंट्स हैं वो कभी लैप्स ना हो, आपकी पॉलिसीज लैप्स ना हो। इसमें आपको क्या करना होता है कि हमें स्मार्ट प्रीमियम पेमेंट फैसिलिटी का एक फॉर्म हमारे साथ रजिस्टर करना होता है, जिसमें आप आपकी निर्धारित प्रीमियम की जो राशि है और जो डेट है वो हमें बता देते हैं। इसके लिए आपको लो ड्यूरेशन फंड में पैसा इन्वेस्ट करना होता है और आपकी सुनिश्चित डेट्स पे वो सुनिश्चित अमाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो इस सुविधा का लाभ भी आप अवश्य उठाएं। बढ़ते हैं अब अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ, जो कि एसआईपीज से रिलेटेड है। हालांकि इसमें ज्यादातर चीजों से, जैसे सेंचुरी एसआईपी मैंने आपको बताया, आप सभी के सहयोग से ये बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो उस पर मैं ज्यादा समय नहीं देता हूँ। स्टेप अप एसआईपी हमारा एक और जरिया है, जिसके जरिए हमारे कुछ गोल्स जो हमें लगता है कि हमें वहां थोड़ा जल्दी पहुंचना है, तो सेमी एनुअली या एनुअल बेसिस पे आप इसमें स्टेप अप कर सकते हैं 500 रुपए के मल्टीपल्स। इसके बाद आता है ऑप्शन एनी डे एसआईपी का, जहां पे हम एवरेजिंग की बात करते हैं। यदि हमें लगता है कि हम बाजार के उतार चढ़ाव अपने तरीके से ना कैप्चर करना चाहें और वो सिस्टमैटिकली कैप्चर होता रहे, तो 1 तारीख से लेके 28 तारीख की आप कोई भी चुनिंदा डेट पे एसआईपीज कर सकते हैं। ये हमारी एनी डे एसआईपी का फीचर है। फिर हम आते हैं अपने मल्टी एसआईपी की तरफ। मल्टी एसआईपी हमें डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा मौका देता है, क्योंकि एक ही फॉर्म से और एक ही चेक से आप अपने निवेश को 3 डिफरेंट अपनी चॉइस की स्कीम्स में इनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो एसआईपी पॉज के नाम से है। यानी कि आपके गोल बेस्ड जो भी एसआईपी चल रही होंगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि अनिश्चितताओं के दौर में हमारे पास कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि उस एसआईपी को रोक दिया जाए। तो उस एसआईपी को ना रोकते हुए ये फैसिलिटी हमने इंट्रोड्यूस की है कि मैक्सिमम 3 महीने तक के लिए आप इसको रोक सकते हैं,
और चौथे महीने से बिना आपके एसआईपी रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट के हम इसको रीइंस्टेट कर दें। तो ऐसे जब भी खर्चे लगे आपके निवेशक को तो उसको बंद ना कराएं, एसआईपी पॉज की फैसिलिटी का फायदा उठाएं। इसके बाद दो और चीजें हैं जो आप सब में बहुत पॉपुलर है। परपेचुअल एसआईपी हम सभी जानते हैं, बेसिकली आपको अनिश्चित काल तक एसआईपी चलाने का मौका देती है। इसमें सिर्फ फोकस ये रहता है कि आप एसआईपी हमारे साथ रजिस्टर कर लेते हैं और जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो चलती रहेगी, यानी डिसकंटिन्यू नहीं होगी। ये है परपेचुअल एसआईपी। फास्ट फॉरवर्ड एसआईपी एक और तरीका है जिससे हम गोल्स की तरफ जल्दी बढ़ना चाहते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा कुछ निवेश है जो हम बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे ही महीने में हम 4 डे स्वैप कर सकते हैं, यानी आपका जो भी अमाउंट है उसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। एक और इसमें मैं फीचर जरूर यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा माइक्रोसिप का। माइक्रोसिप में अगर आपके किसी निवेशक के पास पैन कार्ड की सुविधा नहीं उपलब्ध है तो भी सालाना 50,000 तक की लिमिट तक का निवेश वो इस एसआईपी के जरिए कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपनी ये वेब की प्रेजेंटेशन कंक्लूड करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी इसका फायदा अपने निवेशकों तक जरूर पहुंचाएंगे। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सहयोगी अमित गुप्ता जी को, जो आपको अवगत कराएंगे हमारी कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज से। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ओवर टू यू अमित जी। धन्यवाद शिवम। थैंक यू बाला सर एंड धीरेन्द्र सर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। नमस्कार, आप सभी को सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि धीरेन्द्र सर ने बताया कि डिजिटाइजेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम कई सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आइए उनके बारे में संक्षिप्त से जानते हैं। तो सबसे पहला वैल्यू एडेड सर्विसेज है मोबाइल ऐप्स। सो मोबाइल ऐप में ABSL MF पार्टनर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऐप है जहाँ पे आप OTP और MPIN के सहायता से लॉगिन कर सकते हैं। इस ऐप के लॉगिन करने के बाद आप इसमें नए फोलियोज खोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेज सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन सिंगल लिंक से करने की भी सुविधा इसमें उपलब्ध है। इसके अलावा आप अपने बिजनेस रिपोर्ट्स भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसमें हमने कई सारे फाइनेंशियल टूल्स और कैलकुलेटर्स भी शामिल किए हैं। इसके अलावा एक ऐप है हमारा एक्टिव अकाउंट ऐप। ये भी अपने में एक यूनिक ऐप है। यहाँ पे ये ऐप पे सिर्फ लिक्विड फंड पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और आपके भेजे हुए ARN हार्ड कोडेड लिंक से इन्वेस्टर बड़ी आसानी से लिक्विड फंड में ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसमें इस ऐप में जब आप जाएंगे तो अगर आप राइट स्वाइप करते हैं तो आप परचेज कर सकेंगे, लेफ्ट स्वाइप से आप रिडम्पशन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वेबसाइट पे। हमने अपने वित्त सलाहकारों के लिए एक खास www.abslmfpartner.com बनाया है। इसमें आप बड़ी आसानी से OTP या पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन अगेन यहाँ पे भी करने की सहूलियत आपके पास है। इसके अलावा आप सारे क्लाइंट रिलेटेड रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं, जैसे SIP एक्सपायरी हो गया, SIP सीज हो गया, इनएक्टिव इन्वेस्टर लिस्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अपने ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ABSL MF प्रिविलेज क्लब, जो कि हमारा एक यूनिक लॉयल्टी प्रोग्राम है इंडस्ट्री में, उसके बारे में भी आपको यहाँ से अपडेट्स मिलते रहते हैं। सोशल मीडिया सपोर्ट पे हम आते हैं। यहाँ पे हम फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं। इसके अलावा हमने अपने वित्त सलाहकारों के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी सपोर्ट किया है हमने। जैसे हम को ब्रांडेड फेसबुक क्रिएटिव्स बनाते हैं, ब्लॉग पोस्ट कराते हैं, लाइव फेसबुक सेशंस हम लोग कराते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड टॉक हुआ, जहाँ पे पार्टनर्स फाइनेंशियल प्लानिंग के में डिफरेंट टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। 24/7 चैट बॉक्स। यहाँ पे अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो एक चैट बॉक्स है जहाँ पे आप ABSL MF से जुड़े प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। डिजिटल एम्पावर। आप में से कई लोग हमारे मंथली फैक्टशीट, जो कि एम्पावर के नाम से आती है, वाकिफ होंगे। हमने अब इसे डिजिटाइज कर दिया और ये डिजिटल एम्पावर के नाम से अब आती है और ये बहुत ही इजी टू गो थ्रू है। इसमें हम फंड मैनेजर्स, सीनियर मैनेजमेंट पीपल के मार्केट आउटलुक और व्यूज शेयर करते हैं। इसमें अब हमने कुछ नए फीचर्स भी अब ऐड किए हैं, जैसे हर स्कीम के पेज पे आपको एक पार्टनर इजी लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप ARN हार्ड कोडेड लिंक क्रिएट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टर को भेज के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप से डिटेल पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं। इसमें अगर आप मार्केटिंग सेक्शन में जाएंगे हमारे, तो आप किसी भी स्कीम का 1 पेजर, लीफलेट, ब्रोशर किसी भी लैंग्वेज में आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें कुछ इंगेजमेंट सेक्शंस भी ऐड किए हैं, जिसे मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जरूर देखें। OTM फैसिलिटी, ये एक वन टाइम मैंडेट फैसिलिटी है
जिससे आप लोग वाकिफ होंगे। इस फैसिलिटी की मदद से निवेशकों को बार बार SIP ऑटो डेबिट भरने की जरूरत नहीं पड़ती। मिस्ड कॉल सर्विस, आप 8976096036 नंबर पे मिस्ड कॉल करके अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जान सकते हैं। हम अब व्हाट्सएप सर्विस पे आते हैं। हम में से अब ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, तो इस सेवा के माध्यम से 9225619956 नंबर पे हाई लिखकर आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन आप लमसम और SIP दोनों ही कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी भेज सकते हैं और अपने बिजनेस समरी रिपोर्ट्स भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। पार्टनर प्रायोरिटी डेस्क, हमने अपने वित्तीय सलाहकारों के लिए रीजनल लेवल पर डेडिकेटेड सर्विस डेस्क बनाया है, जिससे आपको क्विक सर्विस मिल सके। SMS सर्विस, आप SMS के थ्रू हमारे NAV और स्टेटमेंट्स मंगवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन डेस्क, बदलते वक्त और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए डेडिकेटेड डेस्क बनाया है, जिससे उनको सर्विस मिलने में आसानी रहे। ईमेल और SMS ट्रांजैक्शन, हमने कई सारे सेंटर्स पे हम ईमेल और SMS ट्रांजैक्शन के थ्रू ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं। और लास्टली हमारा है इंस्टेंट रिडम्पशन। आप हमारी किसी भी ऐप और किसी भी पोर्टल से लिक्विड फंड से कभी भी, यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कभी भी किसी भी टाइम 50,000 तक की निकासी कर सकते हैं और वो इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट खाते में क्रेडिट हो जाता है। तो ये कुछ हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जिनका हम आप सबसे अनुरोध करेंगे कि भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद शिवम और अमित। जैसा कि आपने देखा कि हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपके निवेश संबंधित हर जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। हमारी आपसे गुजारिश है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा निवेशकों तक पहुंचाएं, ताकि हम सभी मिलकर अपने व्यापार को तेजी से आगे बढ़ा सकें।